हेलो, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी बुक। और चले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 को। सो वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है एक बार बता देते हैं। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी याद रखने वाली चीज़ें इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ पेन पेपर में सारी चीज़ें आप नोट करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आ सकता है और यूजीसी नेट में भी आता है, जो कि आप यहाँ से चैप्टर पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा थोड़ी बहुत। देन वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। कैन यू लिस्ट ए नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ metals? Definitely you can. You have studied that the Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. Minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. The railway lines and the tarmac paving of the roads or implements and machinery too are made from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth. Even the food that we eat contains minerals. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बोला है कि ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। सो टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। तो वो किसके वजह से होती है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर इन द टूथपेस्ट, दैट्स वाई। Then fluoride, which is used to reduce cavities, comes from a mineral fluoride. Most toothpaste are made white with titanium oxide, which comes from minerals called rutile, ilmenite and anatase. The sparkle in some toothpaste comes from mica. The toothbrush and tube containing the paste are made of plastics from petroleum. So find out where these minerals are found. All living things need minerals. Life processes cannot occur without minerals. Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients, they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of foodstuffs. What is a mineral? Geologists define mineral as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest talc. Why are they so varied? You have already learned about rocks. Rocks are combinations of homogeneous substances called minerals. Some rocks, for instance limestone, consist of a single mineral only, but majority of the rock consists of several minerals in varying proportions. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. Study of minerals by geographers and geologists. Geographers study minerals as part of the Earth's crust for a better understanding of landforms. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical composition. However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under mode of occurrence of minerals. So, where are these minerals found? Minerals are usually found in ores. The term ore is used to describe an accumulation of any mineral mixed with other elements. So, that is a ore. What is an ore? So, ore is basically the raw form of minerals, so where many impurities or other minerals are also mixed with that. Accumulation, okay, an accumulation. Then the mineral content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined.
This also determines the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main types of formulations in which minerals occur. Minerals generally occur in these forms. In igneous and metamorphic rocks, minerals may occur in the cracks, crevices, faults or joints. The smaller occurrences are called veins and the larger are called lodes. In most cases, they are formed when minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the Earth's surface. They cool and solidify as they rise. Major metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from veins and lodes. In sedimentary rocks, a number of minerals occur in beds or layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid regions, right? तो कोल जो है ये एक आपका सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर फॉर्म होता है, ओके। एंड हमने पढ़ा टीन, कॉपर, जिंक, ये जो भी मेटल्स है, जिंक, लेड एटसेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स, यानी ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है. And another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ore. So bauxite is formed this way. Bauxite is formed this way. So bauxite is formed from involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ore. So bauxite is formed this way. So classification of minerals. Minerals are metallic, non-metallic, and energy minerals. Metallic is three types: ferrous, containing iron, iron ore, manganese, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा. एंड मेटालिक जो है ये नॉन फेरस होता है, तो एग्जाम्पल होते हैं कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट एटसेट्रा. एंड प्रीशियस, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा. नॉन मेटालिक जो है एग्जाम्पल माइका, सॉल्ट, पॉटस, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एटसेट्रा. एनर्जी मिनरल्स जो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है. अब फोर्थ नंबर पर देखते हैं सर्टेन मिनरल्स में occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills. These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water. Gold, silver, tin and platinum are most important among such minerals. The ocean waters contain vast quantities of minerals, but some of these are too widely diffused to be of economic significance. However, common salt, magnesium and bromine are largely derived from ocean waters. The ocean beds too are rich in manganese nodules. Interesting fact, rat hole mining. Do you know that most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government? But in most of the tribal areas of the northeast India, minerals are owned by individuals or communities. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone and dolomite etc. Coal mining in Jowai and Cherrapunji is done by family member in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining. तो ये भी होती है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो है कोल माइनिंग है जो जिससे इंडिविजुअल्स ओन करते हैं. द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल, बट ये चीज़ें हमारी कंट्री में इलीगल है एंड रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी स्टॉप्ड फोर्थविथ and it should be stopped. India is fortunate to have fairly rich and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals. Sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have most of the petroleum deposits. Rajasthan, with the rock systems of the peninsula, has reserves of many non-ferrous minerals. The vast alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals. These variations exist largely because of the differences in the geological structure, processes and time involved in the formation of minerals. Let us now study the distribution of a few major minerals in India. Always remember that the concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and closeness to the market play an important role in affecting the economic viability of a reserve. Thus, to meet the demand, a choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a mineral deposit or reserve turns into a mine, right? So, when it is done, mineral deposit or reserve turns into a
mine. Then ferrous minerals. Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. They provide a strong base for the development of metallurgical industries. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demands. Iron ore is the basic mineral and the backbone of industrial development. India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. India is rich in good quality iron ores. Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly lower iron content than magnetite. In 2018 to 19, almost entire production of iron ore 97% accrued from Odisha, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड। तो आयरन ore कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लेना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन इंडिया। ठीक है, 97% पाया यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया। द रिमेनिंग प्रोडक्शन वाज फ्रॉम अदर स्टेट। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड झारखंड, दीज आर द 4 स्टेट्स इंपॉर्टेंट फॉर आयरन ओर। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटक। Then Kudre in Kannada means horse. The highest peak in the western Ghats of Karnataka resembles the face of a horse. The Boiladila hills look like the hump of an ox and hence its name. Boiladila hills look like the hump of a ox and hence its name. So Kudre in Kannada means horse. The highest peak in the western Ghats of Karnataka resembles the face of an horse. The Boiladila hills look like the hump of an ox and hence its name. तो बेसिकली क्या याद रखना है इसमें? बोइलाडिला का मीनिंग, कुदरे का मीनिंग और क्या। चलो, देन द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। उड़ीसा, झारखंड बेल्ट हमने पढ़ा 4 स्टेट से, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटक। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटक। ठीक है, 4 स्टेट है। Then Odisha Jharkhand belt. In Odisha, high grade hematite ore is found in Badampahar mines in the Moyurbhanj and Kendujhar district. तो ये डिस्ट्रिक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बादामपहाड़ माइन इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। In the adjoining Singhbhum district of Jharkhand, hematite iron ore is mined in Goa and Noamundi. तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का नोआ एंड गोवा मुंडी में भी आयरन ओर मिलता है। नाउ दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बोइलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द रेंज ऑफ हिल्स comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. It has the best physical properties needed for steel making. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। देन आता है बालारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर एंड तुमाकुरू बेल्ट इन कर्नाटक हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक आर ए 100% एक्सपोर्ट यूनिट। Kudremukh deposits are known to be one of the largest in the world. The ore is transported as a slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. Then Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. Though the ores are not of very high quality, yet they are efficiently exploited. Iron ore is exported through Marmagaon port. then आता है मैंगनीज। तो ये जो भी पोर्ट्स के नाम आ रहा है, ठीक है, माइनिंग की नाम आ रहा है, यही सारे इंपॉर्टेंट है, यही आपको नोट करके रखना है, मैप में उसको देखना है और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना है। देखिए एग्ज़ाम में यही सारे से सवाल आपका आएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, तो आपको फैक्ट तो याद रखना पड़ेगा। नाउ मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. तो ये स्टैट भी याद रख लेना कि 10 kg manganese is required to produce 1 ton of steel. It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. ये तो मैंगनीज जो है ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी लगता है और इंसेक्टिसाइड्स पेंट्स में भी लगता है। तो ये देखो, ये है क्या, प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज शोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट। तो हाईएस्ट है मध्य प्रदेश, मैंगनीज का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में। देन आपका होता है महाराष्ट्र में, राइट। देन आता है उड़ीसा,
then Karnataka, then Andhra Pradesh. Okay, so Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh. Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Karnataka, Andhra Pradesh. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में मैंगनीज प्रोडक्शन होता है. Now non-ferrous minerals. So India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industries. Let us study the distribution of copper and bauxite. तो देखो इंपॉर्टेंट मिनरल्स की यहाँ पर एक मैप दिया गया है जो कि बहुत अच्छा मैप है और इसको भी हम काम में ले सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए. जैसे कि जो भी नाम उठ के आ रहा था माइनिंग की, माइंस की, ठीक है, क्या कहाँ कहाँ क्या मिलता है, तो उसके नाम को याद करने के लिए ये मैप हम यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी नीट एंड क्लीन रहेगा ये मैप. और आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जो मिनरल जहाँ मिलता है उसी को मार्क किया गया है. तो मैप काफ़ी स्पेशियस लग रहा है, इसीलिए ये मैप अच्छा भी है, मतलब याद रखने में, देखने में आसानी होगा आपको. नाउ कम टू द कॉपर. सो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. बीइंग malleable, ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are leading producers of copper. तो कॉपर कहाँ का पाई जाती है ना, बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश में पाया जाता है बालाघाट माइंस. खेतरी माइंस इन राजस्थान में पाया जाएगा. सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में पाया जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर, बालाघाट, खेतरी एंड सिंहभूम. नाउ बॉक्साइट. दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम. It is from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is derived और obtained. तो पहले तो बॉक्साइट, बॉक्साइट से हमको मिलता है एलुमिना, एलुमिना से हमको मिलता है एल्यूमिनियम. ठीक है. Then bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau. तो India's bauxite deposits are mainly found in the कहाँ, Amarkantak Plateau, Michael Hills and the Plateau region of Bilaspur Katni. Michael Hills, तो Amarkantak Plateau, Michael Hills and the Plateau region of Bilaspur Katni and the Plateau region of Bilaspur Katni. तो बॉक्साइट रिजर्व हो हमारा इंडिया में कहाँ है, अमरकंटक रीजन में, प्लेटो में है. ओके, देन बिलासपुर काटनी प्लेटो में है एंड माइकल हिल्स में है. तो बॉक्साइट रिजर्व्स. नाउ यहाँ पर दिखाया गया है कि बॉक्साइट, प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 2018-19. तो डेफिनेटली आई होप कि चेंज नहीं हो जाएंगे 2 साल में, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो. मान रहा हूँ कि 23 है, बट फिर भी आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, कोई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कुछ नया निकाले है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो पहले रैंक पे है उड़ीसा बॉक्साइट प्रोडक्शन में. उड़ीसा इज़ द फर्स्ट, देन आता है झारखंड, देन गुजरात, देन छत्तीसगढ़, देन महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश. तो उड़ीसा इज़ द फर्स्ट, देन आता है झारखंड, देन आता है गुजरात. ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. Odisha was the largest bauxite producing state in India in 2016 to 17. Panchpatmali deposits in Koraput district are the most important bauxite deposit in the state. पंचपतमली ये किस लिए फेमस है ना, बॉक्साइट्स के लिए फेमस है. ठीक है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है. अब देखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन III or buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver utensils. 30 years after this incident, aluminium bowls are most common with the beggars in Paris. ये क्या फैक्ट हुआ, कैसा हुआ आप समझो, बट चीज़ें ये है कि नेपोलियन जो थे, इन्होंने एल्यूमिनियम जब डिस्कवर होता तो उन्होंने सारे चीज़ें एल्यूमिनियम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, फिर बाद में ये हुआ कि देखा गया एल्यूमिनियम तो ऐसे उतनी वैल्यूएबल है नहीं, तो जो बेगर्स, पेरिस का जो बेगर्स थे, उन्होंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया. द नॉन मेटालिक मिनरल्स. माइका इज ए मिनरल made up of series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. Mica can be clear, black, green, red, yellow or brown.
Due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. Mica deposits are found in the northern edge of Chotnagpur Plateau. Kodarma Gaya Hazaribagh belt of Jharkhand is the leading producer. In Rajasthan, the major mica producing area is around Ajmer. Nellore mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer in the country. तो माइका डिपोजिट देखो कहाँ है, नॉर्दर्न छोटनागपुर प्लेटो में है, ठीक है. एंड देन कोडरमा गाया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड में है. अब राजस्थान में भी है, यहाँ पर क्या है ना, अराउंड अजमेर आपको माइका मिल जाएगा. नेल्लौर माइका बेल्ट में मिल जाएगा ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द इंडिया. अब बात करते हैं रॉक मिनरल्स की. तो लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कॉम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स. इट इज फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिखाएगा, लाइमस्टोन की. तो लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका राजस्थान में, देन आपका मध्य प्रदेश में, देन आपका आंध्र प्रदेश में, देन छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देन हाईएस्ट है राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश. ओके, हाईएस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़. राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. Now, hazards of mining. Have you ever wondered about the efforts the miners make in making life comfortable for you? What are the impacts of mining on the health of the miners and the environment? The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases. The risk of collapsing mine roofs, inundation, and fires in coal mines are a constant threat to miners. The water sources in the region get contaminated due to mining. Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil, and increase in stream and river pollution. Stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. Now, conservation of minerals. So we all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the Earth's crust. We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created and concentrated. The geological processes of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. Mineral resources are therefore finite and non-renewable. Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possessions. Continued extraction of ores leads to increasing costs as mineral extraction comes from greater depths along with decrease in quality. A concerted effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low-grade ores at low cost. Recycling of metals using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources for the future. Energy resources. Energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles, and to drive machinery and industries. Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium, and from electricity. Energy resources can be classified as conventional and non-conventional resources. Conventional sources include firewood, cattle, dung, cake, coal, petroleum, natural gas, and electricity, both hydel and thermal. Non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, biogas, and atomic energy. Firewood and cattle dung cake are most common in rural India. According to an estimate, more than 70% energy requirement in rural households is made by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Moreover, using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure, which could be used in agriculture. नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो हम एनर्जी मिनरल के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले होता है कोल. इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल. इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स. It is used for power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs. India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements. As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material over millions of years. Coal therefore is found in variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and
Time of burial. Decaying plants in swamps produce peat, which has a low carbon and high moisture content and low heating capacity. Lignite is a low-grade brown coal which is soft with high moisture content. The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. Coal that has been buried deep and subjected to increased temperatures is bituminous coal. It is the most popular coal in commercial use. Metallurgical coal is high-grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces. Anthracite is the highest quality hard coal. Okay, anthracite is the highest quality hard coal. Then आता है bituminous, then आपका lignite and peat. In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, namely Gondwana, a little over 200 million years in age, and in tertiary deposits which are only 55 million years old. तो टू रॉक सीरीज में हमारा जो कोल है पाया जाता है, एक होती है गोंडवाना सीरीज एंड दूसरा होती है आपका टर्शियरी सीरीज. ठीक है. द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल व्हिच आर मेटलर्जिकल कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल. यहाँ पर दिखाया गया कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या है. ठीक है. दिन के कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व, HVJ नेचुरल गैस पाइपलाइन. तो ये मैप को आप देख सकते हो आराम से. आप वेस्ट बंगाल झारखंड के जो बेल्ट है वहाँ पर पाया जाता है आपका दामोदर वैली है, वहाँ पर आपका गोंडवाना कोल पाया जाता है. और जो है उसके बाद जोहरिया, रानीगंज, बोकारो आर इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स. दी गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपोजिट्स. टर्शियरी कोल्स अकर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. टर्शियरी कोल जो है तो गोंडवाना कोल कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल झारखंड में पाया जाता है, दामोदर वैली के आसपास. और उसके अलावा भी आपका पाया जाता है कहाँ, देखो झोड़िया, रानीगंज, बोकारो, ये सारे प्लेसेस में पाया जाता है. एंड द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज में भी पाया जाता है. रिमेंबर, कोल इज ए बल्की मटेरियल which loses weight on use as it is reduced to ash. Hence, heavy industries and thermal power stations are located on or near the coal fields. Right? Heavy industries and thermal power plants are located near the coal fields. Heavy industries and thermal power plants. ये मटेरियल इंडेक्स हम जाकर पढ़ेंगे बाद में कि ओएबार का जो मटेरियल इंडेक्स दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में, तो उसकी पार्ट है ये. हेवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड नियर दी कोल फील्ड्स. नाउ पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल. इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries. Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps. In the rock formations of the tertiary age in regions of folding anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. Petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas, being lighter, usually occurs above the oil. Mumbai High, Gujarat and Assam are major petroleum production. So Mumbai High, Gujarat and Assam are major petroleum production areas in India. From the map, locate the three major offshore fields of western India. Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India. Digboy, Naharkatia and Moran Hukrijan are the important oil fields in the state. तो ये मोरन हुक्रिजन जो है ये यूजीसी नेट में आया हुआ था पिछली बार, यानी 2020 दिसंबर का पेपर में था और डेफिनेटली गलत करके आया था, तो JRF नहीं हुआ था. नेचुरल गैस, तो देखो काफ़ी बेसिक चीज़ वहाँ पर पूछी जाती है. ठीक है. और जाहिर सी बात है आप एडवांस बुक भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी होगा, आपको बस पढ़ना है तो आप बाकी देख लेना. अब नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज, एज रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड कुकिंग फ्यूल with the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution networks. Natural gas is also emerging as a preferred transport fuel and cooking coal at homes. India's major gas reserves are found in the Mumbai High and allied fields along the west coast, which are supplemented by finds in the Cambay Basin. Mumbai High and Cambay Basin में भी गैस
गैस जो है नेचुरल गैस पाए जाते हैं। अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट न्यू रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। द फर्स्ट 1700 किमी लॉन्ग हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर cross country gas pipeline constructed by GAIL India linked Mumbai High and Basin gas field with various fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India. This artery provided impetus to Indian gas market development. Overall, India's gas infrastructure has expanded over 10 times from 1,700 km to 18,500 km of cross-country pipelines and is expected to soon reach over 34,000 km as gas grid by linking all gas sources and consuming markets across the country, including northeastern states. About the electricity, electricity has such a wide range of applications in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways: by running water, which drives hydro turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum, and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बार जनरेट हो गया तो उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर व्हिच इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। India has a number of multi-purpose projects like the Bhakra Nangal Damodar Valley Corporation, the Kopili Hydel project, etc., producing hydroelectric power. Thermal electricity generated by using coal, petroleum, and natural gas. The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricity. यहाँ पर आपको दिखाया गया पावर प्लांट्स कहाँ क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट स्पेशली दिखाया गया है। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पहले एक मैप में हमने दिखा था, वहाँ पर था शायद। ठीक है, तो पहले था। अब देखो, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स लोकेटेड इन योर स्टेट। नाउ आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने जो अभी तक पढ़ा वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस. Rising prices of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussions on the growth of the national economy. Moreover, increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems. Hence, there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass, and energy from waste material. These are called non-conventional energy sources. India is blessed with an abundance of sunlight, water, and wind and biomass. It has the largest programs for the development of these renewable energy resources. Nuclear or atomic energy. So it is obtained by altering the structure of atoms. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate electric power. Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala is also rich in thorium. Right, the monazite sands of Kerala is also rich in thorium. Then आता है solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. नेक्स्ट हम आते हैं विंड पावर में। तो इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकली टू मदुराई। ठीक है, तो लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में। अब अपार्ट फ्रॉम दीज, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लाक्षाद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स. नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन दी कंट्री. नागरकोइल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और जैसलमेर आपका राजस्थान में है. Now, biogas. So shrubs from farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. Decomposition of organic matter yields gas. Decomposition of organic matter, only organic matter, which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual levels. The plants using cattle dung are known as gobar gas plants in rural India. These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung cakes.
Tidal energy. Oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. In India, the Gulf of Khambat, the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast, and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. Now, geothermal energy. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth, where the geothermal gradient is high. High temperatures are found at shallow depths. Groundwater in such areas absorbs heat from the rocks and becomes hot. It is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parboti Valley near Manikaran in Himachal Pradesh and the other is located in the Puga Valley in Ladakh. तो जियोथर्मल एनर्जी हमारा कहाँ पर हो सकता है ना, पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख. ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख में हमारा जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिल सकता है. दैट टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, दीज आर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी. वन इज लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश and the other is located near Puga Valley in Ladakh. Now, conservation of energy resources. So energy is a basic requirement for economic development. Every sector of the national economy, agriculture, industry, transport, commercial and domestic needs inputs of energy. The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources are the twin planks of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport systems instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices and using non-conventional sources of energy. After all, energy saved is energy produced. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 जो है ख़त्म हो गया और 2 चैप्टर और बाकी है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. तब तक के लिए आप इसको रेडी कीजिए एंड सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को. थैंक यू फ्रेंड्स.